will connect this port 0 for lower address bits as well as lower data bits. So हम port 0 को किसके साथ connect करेंगे? We will interface this port 0 with lower order address bits as well as data bit. Same way, we will interface port 2 with our higher order address bits. Higher order address bit के साथ इसको interface करेंगे for our external memory use. So that we are going to discuss next. And port 3 will be used to generate a read write signal. Port 3 है उसका use हम कैसे करेंगे? Read write signal. So read write signal will be generated from here. So that is from this. Read and write signal will be generated for external memory. Write pulse will be provided from this, and read pulse will be provided from this particular pin number 3.6. So means port 3, pin number 6, and seventh pin of your port 3. So we will connect this with our chip selection, or we will connect it with our enable, memory enable, like that. So I will explain that diagram. So this we have discussed that whenever you want to interface ROM, जब आप ROM में से डेटा एक्सेस करना चाहते हो, so you need to generate PSEN bar signal. So PSEN bar signal will be activated and it interprets that we are reading our opcode. And whenever you are reading from internal ROM में से जब आप रीड कर रहे होंगे, तब आपके EA बार की वैल्यू क्या होगी? So EA bar should be 1 whenever we are accessing internal ROM. So आपकी एड्रेस रेंज क्या होगी? What will be the address range for internal ROM? 0000 to 0FFF. But if address will be greater than this and EA bar is equal to 1, then we are accessing external memory. And if EA bar is 0, then we are accessing whole external memory. We are accessing external memory. We are not accessing internal memory. So let me open the diagram. This is the interfacing diagram. ये जो diagram है, this is the interfacing diagram for external memory. So observe here carefully how we have connected it. This is our controller over here. This is our ROM, external ROM, and this is our external RAM that we want to interface over here. So what is the size of RAM and ROM? It is given in question. It is given size of RAM is given. We are going to interface is 16K, and the size of ROM which we are going to interface, that is a 8K. So 16K means what? That is a 2 raised to 4 into 2 raised to 10. So it means that we require 14 pins. So 14 pins means we will use A0 to A13. Same way, यहाँ पे A 8K है. So 8K means what? So 2 raised to 3 into 2 raised to 10. So it means that we will use 2 raised to 13. So we will use 13 pin. So that will be A0 to A12. So A0 to A12, 12 pins will be interfaced with RAM, and 13 pin we need to interface with ROM. So how we will interface this? So ये जो ROM है उसमें हमको address bits connect करना है. So that will be, because now we will use port 0 of controller to transmit data as well as transmit address. So we will use it for multiple functions. So that's why we need to use one latch over here. Latch एक use करना होगा. Latch क्यों use करना होगा? Why we need to use latch? Because we want to use this port for two functions. During some time we will place address first over here. We want to use it in multiplex manner. So we will first place address and we will active ALE signal. So जैसे ही address place करके ALE signal active करोगे, आपका address यहाँ पे latch हो जाएगा. Your lower bytes will be latched. Suppose I want to access memory 05FF. ये memory मुझे access करनी है. Just for example, consider that I want to access this memory, this ROM address. Right now consider for example for ROM address 05FF, and that is for external ROM. External ROM का ये address मुझे access करना है. So पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? If I want to interface external memory, then EA bar need to be
ग्राउंड, ये बार को आपको क्या करना पड़ेगा, so ये बार शुड बी ग्राउंड, आपको ये बार ग्राउंड करना होगा. इट कमिंग इट व्हाट इट मींस दैट वी विल यूज एक्सटर्नल मेमोरी, हम यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करेंगे. सो एक्सटर्नल मेमोरी में इंटरफेसिंग कैसे करेंगे, पोर्ट 0 लोअर एड्रेस बिट, दिस पोर्ट जीरोस विल बी यूज्ड फॉर डेटा. सो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, सो दिस आर द डेटा पिन्स. So from any particular memory location, data will be read and it will be placed on data bus, and via data bus it will go to your controller. So this data bus, it is connected over here. Same way we will place POS address. So पूरा sequence कैसे होगा? What will be the total sequence? So first we will place address over here. So first FF यहाँ पे आएगा. Then we will active ALE signal. तो जैसे ही आप ALE signal एक्टिव करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, FF. So after receiving this FF, ये FF एड्रेस यहाँ पे लेच होगा, एंड दैट एड्रेस यू विल गेट ओवर हियर फॉर रोम. सो रोम का लोअर एड्रेस बिट आपको मिल जाएगा FF. नाउ व्हाट अबाउट द हायर एड्रेस बिट, आपको जो हायर एड्रेस बिट देना है वो कहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, वी प्रोवाइड हायर एड्रेस बिट्स फ्रॉम पोर्ट 2. so port 2 will be used for higher address bits. so port 2 है वो higher address bit इंटरफेसिंग के लिए यूज होगा. so रोम के साथ कितने बिट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे हमको, हाउ मेनी बिट्स वी वांट टू इंटरफेस विथ रोम, how many bits we want to interface with rom. In this example 16k, so we need to interface 13, so that is over here a0 to a0 to a13 we need to interface, because total it is 2 raised to 14, so 14 a0 to a13 we need to interface over here. So we will interface it over here. So यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, so a0 to a13 are interface over here, a8 to a13 are interface, 14, 15 and 16 are not connected. Sorry, 14 and 15, these lines are not connected over here. वो lines यहाँ पे connected नहीं है. So our address 05FF will be placed over here. your address यहाँ से place होगा. So once the address will be placed, यहाँ पे address place हो जाएगा 05FF, इसके यहाँ पे आपको पूरा address मिल जाएगा. Then we are going to access that particular memory. But वो address रोम का एड्रेस है या रैम का एड्रेस है, हाउ वी विल गेट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, whether it is an address of RAM or it is address for ROM. So to differentiate between that, we need to generate PSEN bar signal. So PSEN bar signal, it is not part of port number 2. Port number 2 का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट पिन है. This is a pin number 29, which is PSEN bar, program store enable. If you can recall the pin diagram, so in the pin diagram I have explained this, that what is the use of this PSEN bar, to active program store, program जहाँ पे आपने स्टोर किया है उसको इनेबल करने के लिए. so it should be connected with chip selection of this, let's say that, और इट कैन बी कनेक्टेड विथ, यहाँ पे जो इसका रीड सिग्नल इसको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो. यू कैन जस्ट रीड द डेटा फ्रॉम रोम. तो ये रीड के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, एंड चिप सिलेक्शन के साथ आप कोई और लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो इट शुड बी लाइक दैट. PSEN बार जब इसको एक्टिव मिलेगा, सो इट मीन्स दैट व्हाट, फ्रॉम 05FF whatever data is there, that will be, so that will be fetch and that will be copied in this data bus, and then from data bus it will go to your controller. In this way we can read data from external ROM. external ROM में से डेटा को रीड करने के लिए आपको कौन सा सिग्नल जनरेट करना होगा, you need to generate PSEN bar. you need to active this PSEN bar. It can be connected with read signal, or it can be connected with chip selection logic, like that. वो आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे कनेक्टेड है उसके हिसाब से आपको वो चेक करना है. सेम वे ओवर हियर, दिस इज अ रैम. सो रैम में हम हाउ मेनी बिट्स वी आर गोइंग टू इंटरफेस ओवर हियर, वी आर गोइंग टू इंटरफेस 13 बिट्स. so A0 to A12, so A0 to A12 we are going to interface over here. So if you can observe, so
ये डेस लाइन, दिस डेस लाइन इज जस्ट इंडिकेशन, ये यहाँ पे आपकी रोम है, ईपी रोम, उसके थ्रू हम यहाँ पे, सो दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये डेस लाइन है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये रोम के साथ, रोम में से होके ये डेस लाइन आएगा। इट इज लाइक दैट, यहाँ पे जंपर होगा और जंपर, और यू कैन से दैट कंसीडर 3D पिक्चर, सो दिस विल बी इन फ्रंट एंड दिस विल बी इन बैक। सो यहाँ पीछे से आपकी ये लाइंस यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ऐसा आप एज्यूम करो। तो वो सर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे डेस लाइन इंडिकेट की हुई है, दैट दिस लाइंस आर कनेक्टेड विथ दिस ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, सो A13 इज नॉट कनेक्टेड, A13 यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ है, क्यों? बिकॉज आवर साइज इज 8K, so according to the size you need to interface, so we have interface over here only A02 A12। okay, same thing will happen over here, वैसे ही होगा। सपोज अब ये हम बात करेंगे, लेट्स से दैट 06FF, from this address we want to read the data, ये एड्रेस हम रैम का एक्सेस करना चाहते हैं। सो व्हाट विल हैपन फर्स्ट, 06 will be placed over here, ALE will be activated, as soon as ALE will be activated 06 will be sorry, FF will be placed over here, then FF will be over here, and after that ALE will be activated, so as soon as ALE will be activated you will get it FF from here, आपको FF यहाँ पे भी मिलेगा, you will get FF over here also, सेम वे। नेक्स्ट है वो 06, हायर बिट क्या है 06, so 06 will be placed over here, so 06 you will get over here also, and 06 you will get over here also। now how we will differentiate that we want to access RAM, हम RAM को access करना चाहते हैं, so that we need to active this read signal or write signal। आप RAM में से क्या करना चाहते हो, whether you want to read it from this address or you want to write some data to this address, so according to that you need to connect, you need to generate read signal or write signal। so read and write will be connected with your RAM, and PACN bar will be connected with your ROM। Or in another way, suppose if I want to say that I will just store code over here, so जो भी कोड मेमोरी, जो भी मेमोरी आप एज अ कोड यूज करना चाहते हो, वहां पे आपको क्या इंटरफेस करना होगा, यू नीड टू इंटरफेस PACN bar, and the memory which you want to use for data, that memory will be interfaced via read and write signal। read and write signal उसके साथ इंटरफेस करेंगे, and this read and write signal will be from port 3। ये जो read and write signal जो है वो किसके पोर्ट्स, कौन से कहाँ पे होंगे ये, so it will be from port 3, port 3 के जो पिन है। so आप in this way we are using port 0, port 2, port 3 for interfacing external memory, external memory interfacing के लिए हम इसको यूज करते हैं। Is it clear? Is there any doubt in this interfacing? ये इंटरफेसिंग में कोई डाउट है, एक्सटर्नल मेमोरी कैसे इंटरफेस करते हैं? डोंट फॉरगेट दिस, ये भी आपको याद रखना होगा, EA बार शुड बी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मीन्स इट शुड बी प्रोवाइडेड 0, क्योंकि हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। whenever we are discussing internal memory, so at that time it will be 1, but वो internal memory होगी, but right now we are discussing about external memory, external ROM or external RAM, so this signal should be grounded, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, ground होना चाहिए। okay, only 3 students has reply, what about other students, are you sleeping or what? okay, okay, good, like okay, so this is about the timing diagram, ये जो मैंने आपको बोला है वही है यहाँ पे। what we will do first, will first, ये जो पोर्ट 0 है, so पोर्ट 0 में फर्स्ट हम क्या प्लेस करेंगे, we place first address over here, after placing address we will active, and we will place higher address bit over here, port 2, तो यहाँ पे ये हम प्लेस करेंगे पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 विल प्लेस lower address bits as well as higher address bit, then we will active ALE signal। so ALE signal, जैसे ही ये ALE signal complete होगा, so at that time address will be latch, यहाँ पे आपका address latch होगा at this particular moment, and
after that time your address will reach to your RAM or ROM. आपकी RAM या ROM में address पहुंच जाएगा. So it will take some time. And then after that if you want to active, if you want to read this ROM में से data read करना है तो so that what you need to do, you need to active PSEN bar आपको enable करना होगा. And once PSEN bar is active then it will place data over here. यहाँ पे आपका ये जो data है वो यहाँ पे आपका place होगा. So that data will be placed over here at this particular moment. D0 to D7 में आपका data यहाँ पे place होगा. You will get the data on your data bus and that data will be placed on port 0. So this is for ROM. And same way if you want to read or write, so according to that ये port 0 1 port 0 to ALE. Now we need to generate read signal. So अब आपको read signal generate करना होगा या write signal generate करना होगा. And according to that you will get data on data bus. So अगर write signal generate करते हो तो वो डेटा मेमोरी में राइट होगा. रीड सिग्नल जनरेट करते हो तो डेटा मेमोरी में से रीड होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट we will access our RAM. So this is a timing diagram. So now this is the example for you. You need to draw a diagram to interface 4 kilobyte of RAM, 4 kilobyte of RAM. So you need to interface RAMs over here only. We will use RAM 1 and RAM 2. What is the size of each RAM? Size of each RAM is 4K. Now RAM 1 will be used for code and RAM 2 will be used for data. So that is I have given you. RAM 1 will be used for code and RAM 2 will be used for data. So you need to draw the previous diagram. आपको वो previous diagram है वो draw करना होगा. मैं आपको diagram ऐसा draw करके मुझे explain करना होगा. No need to write this pin number write करने की जरूरत नहीं है. हाँ, but you need to mention this that this is a port 0, this is a port 2, this is a read signal, write signal that will be from port 3, ये बार ये सब कुछ आपको मेंशन करना होगा. ये नंबरिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे. These numbers are not important. So what you need to draw this diagram. So question will be like this. Question can be like this. So if it is a 4K memory, then how many address line you have to interface? 4K memory, so it is 12 in 12 address lines. So it means A02, A11 we will interface over here. And A02, A11 we will interface. In this example, हम ये A0 to A11 interface करेंगे. Now, ALE will be connected like this. Latch के साथ ये ALE connect होगा. Same way we will use this port 0 for address as well as data. Now, with which RAM you will connect PSEN bar signal? PSEN bar आप किसके साथ connect करोगे? RAM 1 के साथ. Yes, very good. Because we will use RAM 1 for storing the data. And with which RAM we will connect read and write signal. Read and write signal किसके साथ interface करेंगे? RAM 2 के साथ. Because we will use RAM 2 with our RAM 2 for storing data. And what about the EA bar pin? EA bar pin भी आप क्या करोगे? So EA bar pin should be also grounded. It should be also 0. Okay. So that is complete description about. I am not going to draw the diagram. This is just for your understanding purpose. Okay. Same thing. Another example. So you have to find out the solution for this. इसका solution आपको search करना होगा. That we will have 32 kilobyte external memory. Total size of RAM that is a given 32K. Which could be used for both running program as well as storing a data. So यहाँ पे 32K की जो memory है, we will divide it into suppose two part. ये memory में हम इसको दो part में divide कर देते हैं suppose. Lower 16K
and upper 16K. So this is a lower 16K and upper 16K. You can consider address range. So we will use this lower 16K to store, let's say, that code, and you will use upper 16K to store data, or vice versa. You can assume anything. एग्जाम्पल के लिए अभी आप ऐसा एज्यूम करो कि लोअर 16K हम कोड के लिए यूज करेंगे, अपर 16K हम डेटा के लिए यूज करेंगे. So now you need to interface this memory for with our 8051 controller. 8051 controller के साथ ये मेमोरी को आपको इंटरफेस करना होगा. If any extra chip you require, you can connect extra chip, decoder, encoder, जो भी आपको अगर यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो. So that is your homework. आप इसको कैसे सोल्व करते हो? This is your homework. You need to interface 32 kilobyte RAM, which we will use for storing. Lower 16K we will use to store data or code, and upper 16K we will use for data. Total size is 32K. उसमें से 60K हमने डिवाइड कर दिया. हाउ वी विल यूज इट? इसको इंटरफेस कैसे करेंगे? चेंज कहाँ पे आएगा? दैट यू नीड टू थिंक. वही आपको सोचना है. इंटरफेसिंग, अब अपर 16K आप एक्टिव कब करोगे एंड लोअर 16K आप एक्टिव कब करोगे? तो आप कैसे डिवाइड करते हो? 32K है टोटल, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो? आपको कैसे पता चलेगा कि जो एड्रेस आया है वो रैम का है या रोम का है? So you need to first of all identify the range. Range identify करनी पड़ेगी. Then you have to use that address bit, which will differentiate between these two. वो address bit का आपको use करना होगा interfacing के लिए. Okay, that is a hint for you, the solution. Okay, so next topic, that is counter and timer in 8051 controller. हम कैसे counter use करेंगे and timer को कैसे use करेंगे? Everything is fine till this particular point. Is there any doubt in memory interfacing? Anyone is having any question in memory interfacing? Memory interfacing में किसी को कोई question है? Okay. Okay. So next we are going to discuss, that is timer and counter. So it is like a IC which we have learned, 8053, or counter or timer IC. Sorry, 8254 and 8253. Counter and timer IC. We can use this. So what is the purpose? What is the use of this 8253 or 8254? 8253 or 54 का, what are the applications of this 8253 or 54? To generate a delay generate करने के लिए. एग्जैक्ट डिले, अगर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जैक्ट डिले जनरेट करना है, so we will load some count value. After that count will expire, you will get some external signal. It depends on mode ऑफ योर 8254. 8254 को आप कौन से मोड में यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको आउटपुट लाइन पे आउटपुट मिलेगा. वेदर यू विल गेट अ स्क्वायर वेव और यू विल गेट द इंटरप्ट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, like that. So it depends. So same thing, that functionality, that facility is available internally. 8051 कंट्रोलर में ये internally available है. Internally it is having two counter or timer. Now, why we are calling it as a timer or counter? I will explain it. जब ये internal frequency पे operate करेगा, then we will say that it is a timer, and whenever it will work on external event, that at the time we will call it as a counter. So there are two such timer or counter available with controller, 8051 controller. That is TL0, TH0, and each timer 0 and timer 1, and each timer is of 16 bit. So 16 bit is divided in like this: TL0, so that is a timer 0 low byte,
timer 0 high byte. Same way, this is a timer 1 low byte and timer 1 high byte. So it will, what is the use of it? To generate a particular accurate delay. And if you want to you initialize this by some specific value, इसको आप manually load करना चाहते हो, if you want to provide some count value over here, so you can provide the count value by this address. ये address में आप अगर data load करोगे, so if you will write like this, move 8A and then let's say that some data, so it will be loaded inside your lower byte of this timer 0. But generally, let's consider that we have initialized it with 0 0. अभी हमने suppose ऐसा assume करो कि आप 0 0 से initialize किया हुआ है. So when there will be clock pulse, जब इसको clock pulse मिलेगी, आपके counter को clock pulse मिलेगी, आपके timer को clock pulse मिलेगी, controller को clock pulse मिलेगी. So at each and every clock pulse, it will increment by 1. So यहाँ पे 0 0 था, so अब ये हो गया 0 1, then it will be 0 2, then it will 0 3, so like that. It is up counters. ये कैसे counters है? Up counters है. हम अगर आप ऑब्जर्व करोगे, so 8254 में हम क्या कर रहे थे? We will initialize with some value. Suppose हम 99 से initialize कर रहे थे. So जैसे ही इसको clock pulse मिलेगी, वो 98 होता था. फिर 97. So that was down counter. This is up counters. Over here, it is up counter. 0 0, 0 1, 0 2, 0 3. So what will be the maximum value? अगर आप there are different mode of this timer. So you can use 16-bit, you can use 13-bit out of this. So we will study it. हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे. मोड 0, मोड 1, मोड 2 and मोड 3. There are 4 modes. So suppose we can use whole 16-bit. वो मोड में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप ऐसा एज्यूम करो कि आप सभी 16-bit आप यूज कर रहे हो. यू आर यूटिलाइजिंग ऑल 16-bit. सो व्हाट इज द वैल्यू? आपका टाइमर कैसे होगा? 0 0 0, then 0 0 0 1, then next value will be 0 0 0 2, and next value will be 0 0 0 3. जब इसको क्लॉक मिलेगा तब, whenever it will get the clock, so your value will be increment by 1. So by incrementing, when it will reach to FFF, this is if you are using 16-bit, so last value will be FFF. So at that particular moment, after this, whenever you will increment, so FFF से increment होके क्या होगा? So again it will be 0 0 0. So at this particular moment, there is one flag, that is a overflow flag of timer. Timer का overflow flag है, that will be 1. Again, once again I am explaining, when your timer will be 1, timer flag will be 1. Timer flag 1 कब होगा? When your timer will switch from all 1 to all 0. So at that particular moment, your timer overflow flag will be set. अगर आप timer 0 का यूज कर रहे हो, तो timer 0 का overflow flag, so that is we will call TF0. And if you are using timer 1, then TF1 will be set. That is a part of one special function register, जो मैं next आपको explain कर रहा हूँ. यहाँ पे TF0 and TF1. These are the timer 1 overflow flag, and this is a TF0, that is a timer 0 overflow flag. It will be set when timer rolls from all 1 to 0. So जब आपका timer all 1 से all 0 होगा, तब ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. And if it is 1, then we can utilize it for our interrupt purpose. तो इसका जो रूटीन है, so इसका एक रूटीन होगा, that is return. So अगर टाइमर 0 अगर आपने जनरेट किया है, टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा, तो उसका रूटीन कौन से लोकेशन पे होगा? So its routine will be on location 00B.
ये लोकेशन पे इसका रूटीन होगा. सो इफ टाइमर 0 will be overflowed, then we will call this routine from this address, and in this routine we have written our logic. हमारा लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर टाइमर 0 ओवरफ्लो होता है तो हमको क्या करना है. what we want to do if timer 0 will be overflow. So that logic we will write over here. Same way timer 1 will be overflow, or timer 1 will be there from all 1 to all 0. जैसे जैसे ये all 1 से all 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी. So once this will be 1, then we will jump to which location? So over here 001B. Over there we have written the service routine for this, and once we will jump to this service routine, जैसे ही हम ये सर्विस रूटीन पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन विद दिस फ्लैग? ये फ्लैग हम क्या कर देंगे? रीसेट कर देंगे. सो दिस विल बी रीसेट. इट विल बी क्लियर्ड व्हेन योर प्रोसेसर और कंट्रोलर vectors to the execute interrupt service routine located at this location. So it will be cleared when particular interrupt service routine you are going to start executing that interrupt service routine. So at that particular moment, this particular flag will be clear. And this is a part. ये जो diagram है, this is ये TF0 and TF1. It is a part of your special function register TCON. So we'll discuss this TCON register in detail now. Fifth bit and seventh bit of this TCON. But till this particular point, is it clear? We will see it. Wait. हम सब कुछ मोड 0, 1, 2 पूरा प्रोग्रामिंग सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे. So don't worry about it. हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Okay, so for today that's it. क्योंकि मेरा अभी सुपरविजन है, so I am having one supervision from 10:15. So I am taking 5 minute break and then I will have to start my supervision. So today we are ending our lecture little bit earlier because due to this supervision duty. We will continue on Monday. Monday को हम जो remaining portion है वो हम discuss करेंगे. There are only 2 chapters from our controller part, so that's why I am going little bit slow. मैं थोड़ा अभी slow जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा syllabus इतना कुछ है नहीं, बाकी नहीं है, and we are having, it might be possible that we are having 3 week teaching now. It is not decided yet anything. If anything will be there, it will be passed to your email group. email में आपको मिल जाएगा whether there will, अभी तो आपको कोई notification नहीं है, so we will consider that the teaching will be there as per our timetable. जो भी timetable है उसके हिसाब से teaching will be continued. If there is any instruction, there is no any circular, then your regular teaching will be there as per their schedule. Okay, so that's it for today. You can leave the meeting. Your lecture is over for today. Yes, Meet, what is your question? A8 to A13 are 6 address line. So how can we present 8-bit data by 6? Definitely, what you have to do, you need to mask remaining bits. जो 2 बिट है उसको आपको क्या करना होगा? You need to mask it. Okay, student, please leave the meeting.